तो भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके चहीते जानदार शानदार पॉडकास्ट में। मैं हूं आशुतोष, मेरे साथ है रोशन समीर अंदम ओक्लाहोमा से। और आई डोंट नो मैं इतना खुश क्यों हूं ये पॉडकास्ट चालू करते हुए, बिकॉज the mood should not be this good, this I should not have the smile. I have to sort of wipe the smoke off my face because of the result and the way yesterday's match went by. एक कड़वाहट सी, ऐसे कहते हैं ना, अभी भी मुंह में आ रही है कि भाई ये तरीके से जो मैच गया, आई फील इट वाज अ ट्रिकी फिक्चर। इफ समबडी सेड कि इट वुड बी अ वेरी हार्ड फॉट फिक्चर एंड हम शायद 2 पॉइंट ड्रॉप करेंगे, तो आई माइट हैव एक्सेप्टेड इट बिफोर द मैच। बट एक बार मैच शुरू हुआ और जिस तरह का गेम गया, वो थोड़ा सा इट्स अ बिटर पिल टू swallow. Roshan, your initial comments before we dig deep into the game. I mean, Klopp himself said it. He said that it was a match to be fought for. We could not have won. We did not have any of our midfielders. We didn't have any of our defenders. Not any, but like we did not have defenders. So I don't think we were going to win this match necessarily, but we would have fought to win this match. या जैसे मैंने कहा ना कि एक बार मैच शुरू हो उसके पहले अगर हमको बोलता ना, जो लाइनअप जब ही आया हमने देखा मॉर्टन नॉट मॉर्टिन मॉर्टन जब भी हमारे लाइनअप में था, तो हमको लगा कि यार ओके, इट माइट गेट ट्रिकी। एंड अगर तभी 1 पॉइंट किसी ने हमको दिया होता तो हमने ले लिया होता कि चलो ठीक है, इट्स अ ट्रिकी फिक्चर, सामने भी बड़े बड़े इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाले प्लेयर्स है, तो एंड अवे फिक्चर, सो हमने एक तरीके से 1 पॉइंट तभी एक्सेप्ट किया होता। अभी अगर हम मैच में जाते हैं तो मैच स्टार्टेड विद वेरी हाई इंटेंसिटी। शुरुआत में हमारे पास भी कुछ अच्छे चांसेस थे। बिफोर लाइक 10 मिनट तक मैंने नोटिस किया था कि वी वर प्लेइंग वेरी गुड, वी प्लेड गुड फुटबॉल, अटैकिंग फुटबॉल। आई मीन दैट्स व्हाट यू वांट टू सी। जब भी तुम्हारा कुछ ऐसा लाइनअप है, तुम अवे जा रहे हो। और उसके बाद एक थोड़ा सा ब्रीफ पीरियड आया जिसमें टॉटेनहम का भी एक वेव आया। एंडोम्बले का आई थिंक असिस्ट था। एंडोम्बले ने बहुत ही मतलब एकदम कुटिन्यो की याद दिला दी, वैसे टाइप का पास उसने दिया था। So actually two things had to go right in that passage of play was first of all, if you see, Emerson was on the right and Emerson was completely free. So in general, sometimes you just give the easy pass, and he did not give the easy pass. And और दूसरा, if you see, generally through balls हमेशा player के in step में होता है, so that he can hit. But this came from outside. That's why it took Konate a little bit more time to reach towards him, and also Harry Kane was smart to leave it a little bit so that it went a little further down, and then he could first time strike it. It was a great goal. Like I mean, any team if it had scored, it doesn't. I mean, Harry Kane is a really good finisher. Like you cannot take that away from him at any point of time. I mean, he's an asshole. He's a dirty cheater. But he's a disgraceful person, but he is a good finisher. Yeah, I mean we cannot take that away from him. और उसी के 13वें मिनट में हुआ, और उसी के बाद में आई थिंक लिवरपूल का जो मॉर्टन हमने उतारा था, उसी के लिए हमको एडवांटेज मिल जाना चाहिए था कि भाई टॉटेनहम खेलेगा 10 लोगों से। बट आई मीन उसके लिए देयर हैड टू हैपन समथिंग इम्पॉसिबल। मतलब जैसे कि इम्पॉसिबिलिटी की बात करें ना, तो एक है कि यार सूरज पश्चिम से उग जाए, मेसी रोनाल्डो के अलावा तीसरे किसी आदमी को बल्लों d'Or मिल जाए, तो उतना ही कम प्रोबेबिलिटी रहता है कि इंग्लैंड के कैप्टन को रेड कार्ड दिया जाए, और वो भी हैरी केन को। मतलब आई थिंक हैरी केन इज कहते हैं ना, ये अगला किंग बनने में, मतलब एक ये दूसरा जो हैरी है उनका, उससे भी आगे चलता है रैंकिंग्स में। मतलब इसको बना दो अगला राजा, तो उस आदमी को रेड कार्ड मिलना, और ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी लिवरपूल वाले क्यों रखते हैं, वो वही जाने। सो पता है सबसे वियर्ड चीज ये है कि हैरी केन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि आई डोंट नो व्हाई डिड आई गेट अ कार्ड। या आई मीन लुक एट द ऑडेसिटी, एंड इवन आई एम सरप्राइज्ड। ऐसा भी नहीं कि आई एम सॉरी, इट शुड हैव बीन अ रेड कार्ड। अरे द बेस्ट वाज, एक है जेफ श्रीव्स जो है, वो एक इंटरव्यू ले रहा है और हैरी केन को उसने बुला के रखा है। वो बोलता है कि हैरी, वाज दैट अ पेनल्टी और वाज दैट अ डाइव? तो बोलता है इट वाज अ पेनल्टी। तो बोलता है लेट्स लुक एट इट, और स्क्रीन लगा के रखा है सामने और उसको वहीं पे लिया है उसको। भाई बहुत मतलब यार ये बंदा इतना सो फुल ऑफ हिमसेल्फ, एंड ही इज वेरी फुल।
मतलब द थिंग इज कि 90 मिनट्स के बाद यू शुड से कि यार देखो मैं मेरी तो गलती है नहीं कि रेफरी ने रेड कार्ड नहीं दिया, बट इट वाज अ टफ फाउल, आई माइट बी केयरफुल, है ना, ऐसा कुछ हाँ, अगर बोल के तो वी वुड आई आल्सो मीन गेट इट कि ठीक है ना यार, कितने बार हम ऐसा के हुआ है कि लाइक हाँ हेंडरसन ने एक चैलेंज किया है एंड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइक कोई पूछता है कि हेंडर डू यू थिंक यू गॉट अवे विद दैट एंड ही सेज लाइक आई थिंक आई डिड गेट अवे विद दैट या चैलेंज। आई मीन दैट इज ऑनेस्टी। वो कहते हैं कि ठीक है यार, वो मतलब इन द गेम हो गया, वो हम्म। व्हेन यू आर प्लेइंग जो भी फुटबॉल खेला है अच्छा बुरा स्ट्रीट लेवल का और वैसा करके, तो ही वुड अंडरस्टैंड कि ठीक है। बट जब तुम बाहर आते हो और तुमको बताया जाता है एंड यू से लाइक आई थिंक आई गॉट द बॉल, नो यू डिड नॉट, यू डिडंट, thankfully you did not get Robertson and he jumped, हाँ, and that अरे is वो why अगर he's रॉबर्टसन जंप नहीं करता तो उसका गया था पैर। and what is this narrative कि भाई ये किसने बताया, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, कि भाई रॉबर्टसन अगर कूदा नहीं होता ना तो इट वुड हैव बीन रेड कार्ड, मतलब प्लेयर के पैर टूटेगा उसके पैर बाद ही उसको टूटने रेड के कार्ड बाद मिलेगा। रेड कार्ड मिलेगा ये वही। क्या ये क्या लॉजिक है, मतलब अरे इंटेंट पे मिलता क्लियर है है, रेड कार्ड का सीधा सा क्लियर है, इफ यू ना। आर हाँ, स्लाइडिंग डाउन, इफ योर स्टड्स आर शोइंग, कहीं पे भी लगे, पैर में लगा तो रेड कार्ड है, सिंपल एज दैट। आई इट थिंक डजंट आई थिंक इट वो डजंट इवन मैटर, इट डजंट इवन मैटर व्हेन द गेम abs- इज फर्स्ट या 10 मिनट्स है, फर्स्ट 5 मिनट्स है, फर्स्ट 20 मिनट्स है, डजंट मैटर, चैलेंज इज अ चैलेंज, पैर टूटेगा तो फिर क्या एब्सोल्युटली करोगे तुम। एब्सोल्युटली। और ये क्या एक्सपेक्टेशन है कि यार तुम है ना, मतलब उतना तरीके से गिरो कि कहते हैं ना जिसमें रेफरी कन्विंस हुए कि हाँ यार पैर तो टूट सकता था, है ना, तुम्हारे पैर को लाइक यू पुट योर, कहते हैं ना, योर करियर ऑन द लाइन जस्ट टू गेट अ लाउजी decision from the referee. Is that the message from the so called pundits? I mean that's really And the worst ridiculous. part of this case is, I think more than the on-field referees decision, I think it's the VAR, because I on-field mean on-field real time में इतना fast होता है ना challenge, हाँ ठीक sometimes है you like second guess, you yeah don't want to give a card, you give a yellow card, which he did, that's हाँ, fine. But then yeah there I think the correct implementation of VAR should be like the referee says, I'm not really sure. This looks like a red card. Can you check it for me? And can you put me on the monitor? Khatam. And let the referee go himself, check yeah the absolutely review the absolutely footage. कि मेरे को Like, तीन why एंगल does दिखा दो। I don't want this VAR bullshit of like, okay, it is just going to look at clear and obvious. What is clear and obvious? And there is Let nothing like let the person on the field make a decision. If he still thinks that's a yellow card, that's a refereeing issue. ठीक है, like that's a human error. Human error yeah हटाने के लिए तो VAR है. अगर तुम्हें implement ही नहीं करना, if you don't want to put that footage on the monitor and let the referee on the field review it himself, then what's the whole point of having it? yeah I mean it is really in shambles. I think मेरे को I don't think this is a case of inefficiency. I don't think this is a case of I ineptitude. I think think this I is think it sheer is just cheating. नहीं नहीं, ये एक और चीज पता है क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक, ओ वी डोंट वांट टू अंडरमाइन द ऑन फील्ड रेफरीज डिसीजन, वी डोंट वांट टू डिसरप्ट द गेम but विद वी। it doesn't make अरे sense. तू If it's अगर, wrong, it's wrong. हाँ You नहीं, know, दैट्स व्हाट आई I एम सेइंग, mean, सो look अगर at अगर look at तुम्हें the ऑन game फील्ड, of cricket. ये लोग तो मतलब एकदम वो कहते हैं ना वो करते हैं, बट क्रिकेट में अंपायर को एक तरीके से बहुत ही वो पवित्र दर्जा दिया गया था एक जमाने में, ठीक है, और हमेशा था कि अंपायर डिसीजन इज फाइनल डिसीजन। बट नाउ क्रिकेट हैज कम अराउंड एंड सेड कि ओके अगर हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है फॉर एलबीडब्ल्यूज, सो व्हाई डू वी नॉट गो फॉर दैट, है ना, हम दे देते हैं ये चीज। मैं वही सो तो बोल, एक टेक्नोलॉजी इतनी, और क्रिकेट भी कोई छोटा गेम नहीं है, 150 साल पुराना गेम है, उन्होंने ये चीज किया है। टेनिस में तुमने ये हॉकाइज ला दिया है, हॉकी हॉकी हैज फैंटास्टिक सिस्टम। अगर कोई हॉकी देखता है तो और नहीं देखता तो जस्ट यूट्यूब पे तुम देखो कि हॉकी में कैसे डिसीजन रिव्यू किए जाते हैं, हाउ क्लियर इट इज। और नॉट जस्ट हॉकी, हम वापस फुटबॉल में आते हैं तो फुटबॉल में भी मैंने जो यहाँ पे आई थिंक आई नीड यू टू कम इन। I think people say that Germany और बाकी सारे देश में भी VAR is not this shambolic. It is हाँ, not this poor in other even countries. मैंने ऑस्ट्रेलिया का एक वीडियो देखा था जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाले हाँ, प्रॉपरली मतलब वो पब्लिक को भी सुनाई दे रहा है, टीवी पे सुनाई दे रहा है। Like why is this transparency not here in EPL? आई Because I थिंक feel they want to have a they want to have a space जहाँ पे थोड़ी ambiguity रख के अपने हिसाब से आर्बिट्ररी डिसीजन लिए जाए, और जो थोड़ा बहुत उनके हिसाब से जो झुकाना है, जो कहते हैं ना बुकीज और फिक्सर्स या जो भी मतलब उनका जो चल रहा है वो करने के लिए जो जो मार्जिन चाहिए उनको वो लोग यहाँ से निकाल रहे हैं। देखो मैं एक चीज, माय रेंट इज ओवर। हाँ, आई
I just feel like if you're not using your technology, so why waste money on technology at all? Let's go back to Yeah, the era where the referee's decision on field was the correct decision. We will crib about it, we'll cry about it, but eventually we'll come around it. That's yeah, that's how the game had been. With technology, I'm just even madder. Like, I can absolutely. see that it is It's like absolutely wrong decision. ये वो अरे खिचड़ी रियल खिचड़ी टाइम में मैं सीरियल. टीवी में देख सकता हूँ कि इट्स अ टू हाँ, फुटेड लंजिंग चैलेंज, इट्स अ रेड कार्ड सीधा. लाइक absolutely. And this is like that खिचड़ी सीरियल. उसमें क्या है कि उनके परिवार के पास एक बड़ी सी गाड़ी है. ऐसा नहीं कि उनके पास गाड़ी नहीं, उनके पास गाड़ी है ना, बट वो गाड़ी हमेशा खराब होती है. तो जब भी उनको बाहर जाना होता है तो वो लोग गाड़ी में बैठते हैं और फिर आधा लोग धक्का लगाते हैं. ये लाइक ये सिस्टम है. अगर हमारे पास वीआर ही नहीं है तो वी आर लाइक हैप्पी. ठीक है, नहीं है तो नहीं है, I बट think I वीआर है think there एंड यू आर needs यूजिंग इट बैडली. fundamental change in the fact that अभी अभी कैसे ऑफसाइड रूल में कैसा किया है कि like you let the run play and then you see if there is a goal, then you go back to VAR. When we are या, going to VAR for every goal, why can't we go to VAR for every tackle? Simple as that. एब्सोल्युटली. और अगर तुमको ये करना भी है ना, मेरे हिसाब से ये चीज जैसे क्रिकेट में या हॉकी में आप लोग रिव्यू देते हो टीम्स को, तो यहाँ पे भी दे दो. यहाँ Hmm. पर अगर किसी Let the प्लेयर को let पता है let कि the हाँ let उसको the manager उसको challenge the या एब्सोल्युटली उसको अगर पता है कि ये पेनल्टी में मैंने नहीं दिया है वो टैकल और उसने डाइव मारा है, तो ही विल क्विकली चैलेंज दैट. और ये सूरत में मतलब वो डाइव मारा हुआ प्लेयर भी बोल देगा नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा ये रिक्वेस्ट है ना, मेरे को नहीं चाहिए पेनल्टी, बिकॉज ही माइट गेट अ येलो कार्ड. ठीक है, तुम दो ना टीम्स को ये चीज, मतलब ये ना देने में का क्या और क्या दूसरा है. और दूसरा और एक और जस्ट लाइक जो बोलते हैं ना कि भाई फुटबॉल का फ्लो, अरे भाई फुटबॉल का फ्लो है ना, ये इतनी रद्दी आर्गुमेंट है मेरे हिसाब से. क्योंकि फुटबॉल में रिवर्स क्लॉक नहीं चलती है लाइक अदर गेम्स. ठीक है, फुटबॉल में तुम लमसम अपने हिसाब से 5 मिनट 6 मिनट 4 मिनट ऐड करते हो, उसका भी तो कोई हिसाब नहीं रहता है. तुम लोग गोल होता है तो एक एक 2-2 मिनट बाहर टाइम वेस्ट कर देते हो. तुम लोग लेसेस बांधने में टाइम वेस्ट करते हो. तो टाइम वेस्टिंग इज अ टैक्टिक इन दिस गेम. ठीक है, तो ये गेम वाले अगर कह रहे कि भी नहीं हमारा फ्लो खराब हो रहा है, अरे पे फ्लो है कब, कौन सा तुम्हारे गेम में. देयर आर मेनी गेम्स व्हिच आर एज क्विकर, लाइक मच क्विकर देन फुटबॉल, और उसमें ये चीजें अच्छे से इंकॉर्पोरेट कर दी गई है. I think the problem is कि both the referee on the field and the referee in VAR, like who are sitting in VAR, like who is priority one? Like there has to या, be someone who has to hold someone accountable, and एब्सोल्युटली, VAR has to do it even if the referee looks bad. Then it is up या, to the referee to make his decision making better. एब्सोल्युटली. Simple as that. See, It's a and cutthroat sport. One point decides, like single points decide अरे हमारी championship. टीम हमारी टीम हमारी टीम यूसीएल में टॉपर बनने के बाद भी 2 मिलियन के लिए खेलने जाती है यार, प्लेयर्स को वो करके, है ना. लाइक ये क्योंकि मजाक थोड़ी चला. वो कोहली वाला स्टेटमेंट आना चाहिए था क्लब से कि दिस इज नॉट अ क्लब लेवल मैच, दिस इज लाइक द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड. क्या अरे, चल रहा है. but the thing is कि it is not, VAR is not consistent. Like the implementation is not consistent just in Premier या, League. Like, तुम चैंपियंस लीग में देख लो, कोई भी टैकल होता है तो वो जाके देख के आते हैं. लेट देम डिसाइड, लेट द ऑन फील्ड, इट इज सिंपल. कुछ टैकल हुआ, ऑन फील्ड रेफरी सेज आई एम नॉट श्योर व्हाट्स हैपनिंग. या, VAR does not have to say कि हमने चेक कर लिया है. VAR has to say प्लीज जाके आप मॉनिटर पे देखो, हम आपको फुटेज भेज रहे हैं. They have no या, right in deciding. The only time they have to decide is when there is an offside goal, when there is या, a penalty or something like that. And in any other tackle, especially tackle, they have to say we are showing you the feed, we don't know, you make the decision, हमें कुछ नहीं करना. Simple as या. that. Let the on-field umpire decide looking at the footage. It is simple. VAR को जो करना है करे भाई. टैकल्स के मामले में तो I am just like, this is crazy. एंड टैकल्स में And क्या है it's कि not जब भी it's टैकल not होता है ना, even, तो एक चीज है कि दो प्लेयर्स में इट वुड बी वेरी क्लियर कि ये क्लीन था कि नहीं था. ठीक है, if a player got the ball, he got the ball and he is very sure कि ये मेरे को अनफेयर कॉल है, तो वो अरे, केस में लाइक लेट अस गिव दैट पावर टू द प्लेयर कि उसको चैलेंज करना है कि नहीं करना. it's not even like ये ऐसे भी नहीं, like 50-50 challenges होते हैं, like both of them are going for the ball या, and then through the momentum जाता है, but then you see both of them are going for the ball and therefore you या, cannot penalize either of the player. In this case it's clear, like Robertson ने ball reach किया and then he is late
And then if Robertson does not jump, his career is over. Like that's a career Absolutely. tackle. And then if anybody who is defending this tackle just does not watch football at all, and they don't know Absolutely. about players like Eduardo of Arsenal. Yeah, Luke Shaw. ठीक है. I mean, but तूने he's back. sorry But थोड़ी again, like, it's why, like, the match is not in the 90th minute where you have to make that kind of a tackle. It's just Absolutely. first 20 minutes. It doesn't make sense. He first of all, he is not a fast player. He's lousy. So he has to Yeah. make, that's the only way he is going to reach for it. And then the worst part of all of it is like, he says, why did I even get a yellow card? Like, Yeah. मैं इंग्लैंड का राजा बेटा हूँ, मेरे को ऐसा देख किसकी हिम्मत हुई है ना. I mean and then like the only and then way there might be there might be some sanctions on the referees कि यार उसे येलो कार्ड भी कैसे दिया है ना, नॉट कि इतना खराब डिसीजन कैसे दिया. I mean, I really want him to come back to Anfield and just kick him around. Like, तुम rough tackle करो उस पे. I don't care. At this point, Harry Kane should know that he's in he's not be all end all of England football. Like, he can fuck off, he can sit, and then England can still win. Yeah, and the thing is that it's so huge coming from you that you are an England football team fan. So anyway, enough. No, not even about the Robertson tackle though. Like, coming back to just VAR, Diogo Jota's penalty claim. Yeah. How clear a shove it has to be. Yeah. That you have, like, the player has to basically die. He has to be stretched. I don't know that there was that pundit that said he stopped there. No, it was not pundit. So it was basically Klopp asked Paul Tierney, like, why did you not give a penalty? He's like deliberately stopped for a foul. मैच भागते भागते कौन मारता है पेनल्टी, मतलब शॉट कौन मारता है? खेला भी है कि नहीं खेला है तू आदमी, मतलब. और ऐसे लोगों को मतलब रेफरी बना दिया गया है. इट इज लाइक, मेरे को ऐसा लगता है ऐसे भी नहीं यार, वो ऐसे शव कर रहा है, वो भाग रहा है, फर्क नहीं पड़ता. लाइक इट डजंट इवन मैटर. Like, how can you do this? How can you extend your arm through the player's back? Simple. This appears like a case कि BCCI said कि देखो वीरेंद्र शर्मा, this is like incompetence है ना. Can you beat this? And Premier League was like, hold my beer, we'll do it. And they comfortably won. Very similar to Steve Buckner. Steve Buckner, absolutely. मतलब क्या ही था ये. But anyway, enough about I think the refereeing. But coming back to the game, I think it was a very good effort from our side. Considering कि एक जो गोल गया वो like goalkeeper हॉलर था, दूसरे बाकी दो गोल हमने किए. The thing is, एक और penalty shout था जो कि नहीं मिला. और काफी सारे चांसेस मिले थे, काफी सारे अच्छे शॉट्स थे, स्क्रीमर्स आ सकते थे, but we played with what we had. That's the most important thing. And the problem with the last game was it was easy for them to clear us out because they have three players in the front who are really fast, and to basically manage for the midfield, our defenders are pushing up, so they were closer to the midfield. So अगर कोई ball break होता है तो they are first on the ball. I completely understand that tactic, but all Tottenham had to do was just put a ball over the defenders, and then Son and Kane are just running behind us. It was just this was the whole trend of the game. And so if we did not reach for the ball, like Tyler Morton, I mean, he's so young. He's just 17. When I was 17, I was nobody. So, but again, like, it's just that it is difficult. I mean, streets of PDB will definitely disagree. Yeah, I mean, you are like the Stuart Downing of Gandhinagar. No. But the thing is ki, the quality of us is we always try to reach for the ball as soon as possible, and we don't give time to the players to like look up and like dink one over the defenders. And it was done many a time. So that's why I think we were very lucky that we have Alisson as a goalkeeper and Tottenham is just dog crap. Some people were like कि Alisson का गलती था, and that led to us conceding the goal. But the thing is कि उसके अलावा अगर तुम मैच देखते हो तो
लिटरली 2 से 3 ऐसे जगह पे एलिसन ने जो गोल रोका है. I don't think other keepers would be able to do that. See, the other also आखिर में भी जब when we were 10 men like we were 1 man down and वो जो एलिसन का पास था सिमिकास को, we could have had a goal there, right? I mean, Alisson brings so many things. Like problem Adrian से हमको वही था कि भाई Adrian के केस में he makes these kind of like mistakes, lots of it. जबकि Alisson के केस में क्या है कि वो इतना अच्छा काम करता है और एक आध दो गलती ऐसे हो जाती है. And we should be lucky. वो एक चीज है ना कि भाई he is allowed to do that. अरे the thing is, Alisson has done that like many a times. He of himself, like if people want to know anything about how Liverpool plays, they should just listen to Klopp and his post-match comments and stuff like that. He is an offensive-minded goalkeeper. As simple as that. He is a sweeper keeper. That is absolutely the fact. हर बार नहीं होता. It's just human nature. That's fine. I mean, like but it brings a good. It just looks bad. It just looks bad because you know, like you're coming and sliding down and you miss the ball. It's a hard technique. It just looks bad on and the problem is like people will not remember his save against Dele Alli, but will definitely remember what he did. So it's just nature of a goalkeeping job. इसी चक्कर में तो मतलब मिग्नोले को आज भी बेचारे गाली देते हैं. Whereas he did a 6.5 out of 10 job at Liverpool, right? I think Mignolet is a really good keeper. We also had a problem of defenders in front of him. Yes. Mignolet को शायद I keep saying this, मतलब मैं कुछ चीजों पे मेरी पेन अटकी रहती है. मैं हमेशा कहता हूँ कि उसको VVD के आने के बाद नहीं मिला था मौका. I'm not saying कि वो एलिसन बन जाता. No, I mean I'm not that delusional, but उतना भी खराब नहीं करता जितना उसने otherwise किया था. मतलब he did not have the problem of Mignolet was not shot stopping more than Liverpool. वो Brendan Rodgers नहीं था. वो थोड़ा सा है ना उसकी जो वो कहती है ना अवेयरनेस एक जगह का, वो कॉर्नर वगैरह में असर्ट नहीं कर पाता था अपने आप को थोड़ा सा. That and I think he is not a ball playing goalkeeper. He cannot keep the ball at his feet. Like वो cry of turn नहीं मार सकता Alisson जैसे to like take it away from a defender, and like he gets nervous when somebody is charging towards him and when he has ball at him. So he's not a player who can do that. He's a good shot stopper. That's it. He's not a good Alisson Ederson kind of defender. So it's just like the playing style was not for him, and that's why we wanted Alisson more than anything. We wanted a good goalkeeper, sure, but we also wanted someone who was calm with his feet. Like he's basically 11th man who can pass. Yeah, absolutely. Not also, a keeper just like hoofing the ball in the air. That's it. So. Yeah. And Alisson के केस में वो Neuer उसके जैसा वो शो ऑफ भी नहीं रहता है Alisson का. He doesn't show what like that. तो otherwise I think we can allow Neuer a little showboating because he is the person who has kind of introduced sweeper keeper concept and he's good at that. That's also true. I mean, मतलब वो फैशन में भी शायद यही चीज. Like he is actually a trailblazer sort of person in this. So, anyways, coming back to our game, we digressed a lot actually. हम Neuer पे चले गए. The thing is कि I mean, do you think what would you say? Like हम 3-2 कर सकते थे या are you like content with whatever happened in 8 point से तुम वो हो? Because Chelsea ने point drop किया, so like a very good कहते हैं ना एकदम अच्छे competitor के जैसे हमने भी बोला कि नहीं आज तो हम पक्का नहीं करेंगे drop point again तुम्हारे आगे. And now Man City are 3 points ahead. And लोगों ने तो अभी से बंद कर दिया है कि भाई प्रीमियर लीग खत्म हो गया है. So your views on the overall title race and whether we should have tried and gotten those 3 points. Title race is not over for me, I think. So the squad that we had was not really good anyway. So expecting them to generate a win was too far-fetched. And so I think we consider ourselves as not so unrealistic fans where we think that, like we will win every game that we put a squad.
and I was hearing some rumors again like कि we don't have squad depth. अरे भाई कोविड हो जाएगा तो तुम किसको खिलाओगे, मतलब have some shame. Then again वो थोड़ा सा separate issue है, हाँ, मतलब that is a I'm separate just saying issue. like the shame was that this went back to FSG out kind of a thing. I'll not go there, but या मतलब वो मेरे जैसे ही लोग करते हैं ऐसी बात है, बट ये केस में मैं इसलिए नहीं कर रहा कि यार बड़ा लास्ट मोमेंट पे चीज आ गई, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट. मतलब मैं तब करूंगा जब ये F1 वगैरह आएगा और स्क्वाड थिंकिंग दैट 20 को कोविड होगा तो 20 खेलेंगे, सिंपल एज या. बट फिर क्या है कि तुमको वरुण चक्रवर्ती लेवल का एक प्लेयर चाहिए जो फिर मैच ही कैंसिल कराए. मतलब ऐसा आधा अधूरा. लाइक आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद थियागो कि यार ऐसा कैसा मतलब कोविड कराया, लाइक देन यू हैव द लाइक पूरा मैच ही कैंसिल कराओ, हम अगले महीने खेलेंगे. I think Liverpool had the choice of postponing the game. Klopp said he wants to play. That's अच्छा. It is still on the teams. If they feel like they can play a game, they will play a game on the slot that they are supposed to broadcast time wise. So it was our choice to play. But again, these things will happen again. Like it's still half a season left. There will be many more game weeks when Chelsea and Manchester City will lose points. Yeah. I think I am happy that we got 1 point at least, because how the game was between 20 to 40 minutes, I think we could have conceded 3 or 4. It could have been a worse game and we could have been in the worst mindset as well. Like we showed a fight. Even if we had lost 4-2, we showed fight. We showed that we can still play. Tottenham was playing with a full squad, and so it's understandable. It's okay. And that I would have let this go like Aston Villa game. That's fine. और ये Conte की team थी, so that's also there. Right, and we'll have many more chances to come. There are a lot of teams that are bad this time. So. I mean, but how do you reckon Man City would shape up? Because हमने देखा है कि जनवरी के बाद वो थोड़ा सा पैडल दबाते हैं और फिर क्या है कि उसके रेयर व्यू मिरर में भी दूसरे नंबर वाला नहीं दिखता है कई बार. Like we have seen that. I'm not saying that it will happen again, है ना? मुझे अंदर से ऐसा लगता है, but मैं ऐसा I'll not say that out loud. What do you think? How are they playing? Sorry. I'll say City will struggle if Laporte gets injured again. Like that's the only reason that they struggled last year, I think, or last year when we won the Premier League. Laporte was injured for majority of the season. Apart from that, Jack Grealish and Phil Foden look really good. So there is no stopping to Manchester City unless like something happens and there's a Watford. Townsend जैसे एक दो पागल गोल मार दे, उनका दिन ही खराब आ जाए. And then we will play them. So hopefully we make sure that we capitalize on that opportunity. यार किसी बहुत ही मतलब इतना पॉजिटिव आदमी मुझे मिलना है. उस आदमी को मैंने ट्वीट पढ़ा था, I'm forgetting the name. तो उसने कहा था कि भाई वो जो हम 1 पॉइंट से हारे थे वाली वो था फाइनल डे पे ब्राइटन था वो वाली सीजन में, तो क्या तब हम मैन सिटी से जो मैच हारे थे, अगर वो हम जीते होते तो हम भी जीते होते हैं ना. हम भी तो कहाँ इतने पिछड़े थे, तो हमको हमारे मैचेस जीतने हैं एंड वी हैव टू एंश्योर दैट वी विन अगेंस्ट मैन सिटी. सो आई डोंट हैव डाउट्स कि हम मैन सिटी के सामने नहीं जीत सकते. आई थिंक वी कैन विन अगेंस्ट देम एनी डे. मेरे को वो डाउट नहीं रहता है, बट मेरे को है कि यार मेरे को बाकी के गेम्स का जो कंसिस्टेंसी है ना, वो हमारा जो थोड़ा एफकॉन आ जाता है और भी 50 इशू जीवन में रहते हैं हमारे. The good thing about वो बात से मेरे को डाउट रहता है. आई एम जनरली मोर मतलब बीइंग मैं 15 साल पुराना फैन होने के नाते ना, मैं प्रीमियर लीग से ज्यादा कॉन्फिडेंट हमेशा यूसीएल में करता हूँ. लाइक वो कप गेम्स में आई फील के यार अपने दिन पे हरा देंगे, बट वो 10 गेम्स है एंड एवरी गेम इज अ डिफिकल्ट गेम इन प्रीमियर लीग. सो I think I'm sort of wild like that. For Manchester City this year, they don't have African players with them, so that is one advantage, that they will have their squad with them. And also they just have a really good squad and they have a really good manager. At the end of the day, we just have to accept the fact that they are a great team. यार उनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाए एक साथ में कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, जीवन का मूल अर्थ क्या है, ये सारे सवाल सभी को एक साथ आ जाए. एंड दे आर लाइक छोड़ो यार, पैसे तो मिल ही रहे, नहीं खेलना है ना, काहे की ग्लोरी. 4 प्रीमियर लीग जीत ली है पिछले 10 साल में, है ना. ऐसा सभी को एक साथ आ जाए, है ना.
them the most. पैप को मैसी आधी रात को रो के फोन करके बुलाया कि नहीं पैप तू इधर आ जा, लाइक ये सब हम उम्मीद कर सकते हैं, बट I think ऐसा इमेजिन करना for कि वो them लोग सडनली खराब खेलना चालू कर देंगे यार, आई डोंट थिंक कि वो रियलिस्टिक है। मैंने बोला वो ज्यादा रियलिस्टिक है। it will be interesting to see how far they go in Champions League, because their priority will be Champions League because they haven't won it. So it could be like बट if they वहां पे भी तो, अरे बाबा वहां पे भी तो चैलेंज नहीं है ना, खुद टीम आई है उनके सामने, तो वो भी तो एक इश्यू रहता है। no, I mean after quarterfinals they'll get a good team. It's just see again, like it's a long season. They are in both FA Yeah. Cup and World It Cup. is still a long season. I'm not saying like देखो मैं गेम वीक 1 पे भी इतना ही पेसिमिस्टिक होता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी पेसिमिस्टिक सर मैं तो आई नो, बट स्टिल अगेन बीइंग अ रैशनल पर्सन, लाइक ट्राइंग टू बी अ रैशनल पर्सन, आई अंडरस्टैंड कि ये इट्स अ लॉन्ग सीजन, वी जस्ट हैव टू कीप accumulating our points, we have to ensure कि हम हमारी इजी गेम्स जीत रहे हैं डिफिकल्ट गेम्स में, जैसे कि एस्टन के सामने जो कैरेक्टर वो हम दिखाते रहे। सो आई मीन let us take it deep, like वैसे करके गेम वीक 35-36 पे भी अगर if there's a chance, then we'll see who will blink, ऐसे सब I बात think मेरे that is a मेरे team मन में talk. भी आती है, ऐसा मैं इतना भी नेगेटिव आदमी नहीं हूँ। No. I think that is a team talk with Klopp. Like Klopp ka team talk will also be the same thing as we have to make sure we Yeah. win. That's the only thing. Yeah. We have to do अभी things ये that स्टेज are पे तुम यही in बात कर our सकते control. हो। यस, ये स्टेज पे हम यही बात कर सकते हैं कि हम हमारे मैच देखो, तो है ना, अभी उनके भी तो 20 मैच बाकी है, सो अभी से उस डिस्कशन में जाने का भी ज्यादा मतलब नहीं है। But I mean, there is yes, a big chance that the Premier League might get cancelled for a while until like Omicron kind of thing comes, like it settles down a little bit. So we are I not don't really know. sure where we are going, Yeah. So I mean, So, yeah. let's see कैसे जाता है। But I think this was an eventful game week, और It was a then I good feel game. Apart from all the controversy around it, it was a really good game. If I people, hate people like Roshan and everybody who कहते हैं ना endorses things like कि just because कहते हैं ना ऐसे भसड़े हुई है गेम में, तो वो गेम को but like like this is a good, tactical wise, if you see, हाँ yes, वैसे I love Conte is not known for putting the ball up to the defenders and being that attack minded. So yeah. it's ना just वो battle of हिसाब the से I agree। amazing. नहीं आई अग्री। मैं वो एंगल से कह रहा था कि कुछ लोगों को क्या लगता है कि वो कंट्रोवर्सी आ जाती है कि हार्ड फोर्ट के नाम पे रैश टैकल्स को लोग बोलते हैं ना कि भाई दिस वाज अ प्रॉपर प्रीमियर लीग गेम, वो लोगों को मैं क्रिटिसाइज करता हूं, बट एज यू सेड कि tactical wise, because Conte also showed that what he can do, this was a good side against his team, so we also got a glimpse of what is to come from Tottenham। तो वो भी एक चीज है, एंड आई फील आई होप एंड आई प्रे दैट कहते ना, और अगले 6-8-10 साल तक वो लोग फिर से एक भी ट्रॉफी ना जीते, बिकॉज दे डिजर्व नथिंग, दे डिजर्व शिट, एज लॉन्ग एज दे हैव प्लेयर्स लाइक हैरी केन। या क्या so people, like, if you all know, Tom Holland is a Spurs fan, so Tom Holland, yeah, I mean, so I request so everyone to किसी not ने लिखा find था कि why Spider-Man is a Spurs fan, because their cabinet is full of webs. So I guess I do not want to give any other closing remark than this. yes. So बस यही चीज है कि do not watch Spider-Man because Spider-Man is his first fan. So that's it from my side and Roshan. Thank you all for Bye, guys. watching our Thank video, you so and like, comment, subscribe. Thank you. Bye, guys. Bye.